एवरीबॉडी अंडरस्टूड डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस? चलिए थोड़ा सा एनालिसिस और कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं. चिल्ड्रन, इन कैश अकाउंट, by virtue of nature, debit total sounds to be more than credit total. Yes or no? That's why shortage appeared where? Credit side. And what did we put? Carried down on the credit, and brought down appears on the debit. It is known as what, children? So ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. Any ledger account whose debit total is more than credit total will have carried down on the credit side. I repeat, children, carried down on the credit side and brought down, children, on the debit side. And it is said to have which type of balance? फिर से सुन लीजिए. Any ledger having debit total more than credit total will comprise of carried down on the credit side prior to the total and brought down on the debit side after the total, known as what? समझ में आ गई बात? This is the definition of debit balance. नोट्स में लिखी हुई है, टेंशन की जरूरत नहीं है. Similarly, any ledger account, children, any ledger account which has credit total exceeding the debit total will have carried down on which side? Debit side before the total, and brought down on which side? After the total, known as what, children? तो अगर डेबिट एक्सेस है, क्रेडिट शॉर्ट, डेबिट बैलेंस. क्रेडिट एक्सेस है, डेबिट शॉर्ट, कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस का जो असाइनमेंट है डेफिनेशन का, चिल्ड्रन, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस. आई रिपीट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट एक्सेस है तो डेबिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट एक्सेस है तो क्रेडिट बैलेंस. एंड ऑलवेज, चिल्ड्रन, ऑलवेज जब भी आप बैलेंस की बात करते हैं, व्हेन सो एवर, चिल्ड्रन, वो बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन देख के बोला जाता है, ना कि कैरेट डाउन देखकर. समझ में आ गई बात? सिमिलरली परचेज अकाउंट भी वैसे ही है, सेम विद मोहन एंड ऑल अदर अकाउंट्स. सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए 2 मिनट में लिटरेचर पढ़ लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा लोगों को. बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड credit sides. When posting is done, many account may have entries on the debit side as well as on the, children, credit side, and the net result is known as what? Balance. So balancing means writing the difference between the amount column of two sides in the lighter side. Sir, वो lighter चलाएंगे ऐसा वाला? C/D. That is a smaller side, so that the grand total of both the sides become equal. ये carried down का जिक्र हो रहा है. तो very quickly, children, यहाँ पे आप लिख दीजिए balance C/D. Balance C/D on the lighter side. कुछ अमीबा टाइप शेप बना दिया मैंने. Quickly, चलिए. Moving ahead, children. स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग. सबसे पहले आपको पोस्टिंग करनी है, चिल्ड्रन. देन दोनों साइड का आप कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस. एंड वेयर वील पुट द डिफरेंस, चिल्ड्रन? शॉर्ट साइड. इफ डेबिट इज शॉर्ट, टू बैलेंस कैरेट डाउन. इफ क्रेडिट इज शॉर्ट, बाय बैलेंस कैरेट डाउन. एंड इट इज नोन एज व्हाट? एंड व्हाट वुड बी द डेट? लास्ट डेट. ओके. देयर आफ्टर स्टेप 4, व्हाट वील डू? शो द टोटल्स जो हमने ब्लू कलर से किया था. एंड देयर आफ्टर, चिल्ड्रन, वील पुट द डिफरेंस ऑन विच साइड? हायर साइड. कौन सी होती है हायर साइड भाई? ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट साइड. आफ्टर द टोटल. अगर कैरेट डाउन 2 वाली साइड पे है, चिल्ड्रन, तो ब्रॉट डाउन किधर आएगा? और कैरेट डाउन अगर बाय वाली साइड पे है तो ब्रॉट डाउन किधर आएगा? 2. एंड इट इज टर्म्ड एज व्हाट? डन व्हेन? ऑन द फर्स्ट डेट. समझ में आ गया चिल्ड्रन? समझ में आ गया? प्लीज कम डाउन टू दिस पेज, चिल्ड्रन, एंड प्लीज राइट समथिंग एज आई एम पुटिंग. पुट द हेडिंग, चिल्ड्रन. Statement to verify
the accuracy of postings in ledger. And children, this is known as trial balance. Heard this well? Heard well, children? We'll have a format like heads of accounts, or if you do not want to write this, you can have a generic paracetamol titled as particulars, LF, debit balance, and credit balance. The first account we had, children, was cash account. Please write the full spelling of the word account. The second one is capital account. In real businesses, children, we prepare them in alphabetical order. Furniture account, then children, purchase account, then it was sales account, and we had wages as well, salary. Then children, Mohan was also there. That's it. And bank. हमने तो randomly लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुरेश भी है, चलिए राइट सुरेश as well. Children, put this much fast, quickly. चलिए. So children, cash account, capital, furniture, purchase, sales, salary, Mohan, bank, and Suresh. Some accounts had brought down on the debit. So we'll put the value where? Debit balance column. Some accounts had brought down on the credit. We'll put the value where? Credit balance. अब समझ में आए क्यों मैंने वहां पे हर इंसान का एड्रेस नोट करवाया था आपको, उसको उसके घर तक पहुंचा के आना है. चलिए, कैश अकाउंट चिल्ड्रन, which type of balance we had? Debit or credit? How much? Write 66,000 and put a dash. Capital had which balance, children? Credit. How much? 1 lakh. Put on the credit side 1 lakh. Furniture had which balance? How much? Furniture का 50 था? No. Furniture had only 8,000 bhai. Purchase how much, children? Purchase had 50. Sales brought down was on the credit side. How much? 51,000. Salary was on the debit, children. How much? Mohan brought down was on which side? How much? 20,000. Bank, children, brought down was on which side? How much? And please put a dash if you are not posting in the other column. And Suresh, children, brought down was on which side? Mohan ka 23 hai. People told 20, so I wrote 20. Chaliye, write 23. Suresh, children, brought down is on which side? Suresh, children, brought down 42. Now we'll show the totals, and certainly true that the total would be same. But ऐसा हो सकता है that total may not be equal on both sides. What to do in such cases? You'll be told as and when the time comes. It's 0, 0, 0, 3 plus 1, 4. Children, 1,74,000. Here also definitely we'll get the same answer. Picture अभी बाकी है. ऐसा नहीं कि ट्रायल बैलेंस पे अकाउंटिंग खत्म हो गई. इसके बाद हम फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं
वो सर कैसे करेंगे, मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, बस सुन लीजिए, समझने की कोशिश मत करिएगा। कैश, फर्नीचर, सुरेश, they are classified in a category. Capital, Mohan, will be classified in other category. Bank will be classified in the same category. Then children will classify purchase and salaries in a separate category and children sales in a separate category. मैं आपको कैटेगरीज बता देता हूं, लिखिएगा मत। This is an asset, yes or no children? This is also an asset. Money kept in the bank is also an asset. We are supposed to take money from debtor, he is also an asset. And children, this belongs to the category of capital. Supposed to pay money to Mohan, he is a liability. Purchase is an expense, salary is also an expense, sale belongs to the category of income. So what we'll be doing thereafter, हम expenses और incomes को लेकर children profit loss निकाल लेंगे और बाकी चीजों से बैलेंस शीट फिर से बना लेंगे। Got it? तो आपको इतना भी समझने की जरूरत नहीं है। चलिए, children, very quickly put this. As soon as the total is written, put your hands up. After preparation of ledger, what do we prepare? The answer is well understood by all. What do we prepare, children? Trial balance. Trial balance बनाने के और भी तरीके होते हैं, but this is the logical approach. और जितना आपने अभी तक अकाउंटेंसी में पढ़ा है बच्चों, this is the project part as well. आप पहले जर्नल बनाते हो, फिर लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बैलेंस. दिस इज द चेन प्रोसेस इन अकाउंटेंसी. चलो आगे. चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड. आई होप सो इस क्वेश्चन का मैंने आपको लेजर बनाने को दिया था. चलिए, चेकआउट चिल्ड्रन, चेकआउट चेक करिए. पहले कैश अकाउंट चेक करें. बाय परचेज 25,000. डेबिट साइड टू सेल्स 50,000. Debit side to Robert 6,000. Credit side by Gopi 5,000. And by furniture 7,000. Correct? Correct? इसको बैलेंस मत करिएगा. क्वेश्चन में एक एरर है. आपके पास कैश था नहीं तो आपने गुड्स कैश में खरीद कहां से लिए है? पहली एंट्री में पेमेंट कैसे हो सकती है? ओके, तो बैलेंस मत करिएगा, थोड़ा नॉन जेन्युइन इलीगल क्वेश्चन है ये. परचेज अकाउंट चिल्ड्रन, टू कैश 25,000. To Gopi 19,000. That's it. After that, sales account. Buy cash 50,000. Buy Robert 8,000. That's it. Correct? Then we have furniture account. To cash 7,000. Then children, Robert's account. To sales 8,000. Buy cash 6,000. समझ में आ गया? बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं, बड़े काम की चीज है. चिल्ड्रन, इज सुरेश अकाउंट एंड मोहन अकाउंट विजिबल टू एवरीबॉडी? एक इंटरप्रिटेशन करते हैं. वी बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन वर्थ हाउ मच? पेड हिम हाउ मच? येट लायबल टू पे हाउ मच? ही इज आवर क्रेडिटर. ही इज आवर, एंड वी हैव टू पे हिम स्टिल 23,000. समझ में आ गया? सुरेश चिल्ड्रन, गुड्स सोल्ड वर्थ, बट ही डिडंट पे इवन अ सिंगल पेनी. ही इज आवर डेटर वर्थ रुपीज 42,000. समझ गए? चलिए, आफ्टर दिस रॉबर्ट हो गया. चिल्ड्रन, गोपी, चेक आउट गोपीज अकाउंट. इट्स बाय परचेज 19,000. thereafter to cash 5,000. Correct? चलिए, that's all children. हाँ हाँ, और भी हैं. Let me provide a reading of this children. Debit balance, देखिए वही चीजें लिखिए जो मैंने बताई कि नहीं. Total of debit side exceeds which side children? Children, total of debit exceeds which side? Credit. Carried down will appear where? And brought down would appear where?
Credit balance, children, total of which side exceeds? Credit side. Carried down appears on the, brought down appears on the. इतना समझ में आ गया? So children, ये जो डेबिट बैलेंस वाले आपके अकाउंट्स होंगे, they generally reflect what? Asset and expense. क्रेडिट बैलेंस वाले क्या रिफ्लेक्ट करेंगे? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस चिल्ड्रन. ये दो लाइनें आप समझ लीजिए, आपका ट्रायल बैलेंस बन गया. कुछ कहेंगे सर हमको तो समझ में आ रहा है कि हमको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है सर. पहले दिन भी एसेट कैपिटल लायबिलिटी चल रहा था, 3 महीने हो गए, आज भी वहीं फंसे हुए हैं हम. आप जिंदगी भर यहीं फंसे रहेंगे बस. चलिए, सो लेजर और जर्नल के डिफरेंसेस हैं, सबको रीडिंग मटेरियल है, यू कैन डू इट. आते हैं चिल्ड्रन एक नए कॉम्पोजिशन पे, टाइटल्ड एज व्हाट? पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री. बड़ा आसान होता है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट चिल्ड्रन, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. मेरे को थोड़ा सा स्क्रीन साइज रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है. चलिए, रेडी चिल्ड्रन? ध्यान दीजिएगा, सेम लॉजिक में यूज करूंगा, कुछ नया नहीं है. द अकाउंट विच इज डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री इज व्हाट चिल्ड्रन? विल गेट इट्स which side filled up? Born idiots. Which side children? Debit side, with the name of the opposite account. With the name of the, literature नहीं पढ़ेंगे तो लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे. Account credited in the journal entry is what that I have marked children. Will get its which side filled up? With the name of the opposite account. समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, तो डू आंसर मी अगेन चिल्ड्रन. कौन सा अकाउंट पहली एंट्री में आपको डेबिट में नजर आ रहा है? परचेज अकाउंट. सो परचेज अकाउंट में कितनी वैल्यू आप लिखेंगे? लेट्स सी. ना ना ना, बात की बात है, बात की बात है. यहाँ पे परचेज अकाउंट जर्नल में डेबिट साइड पे, करेक्ट चिल्ड्रन? तो आप परचेज अकाउंट की कौन सी साइड फिल करेंगे? अब आप बड़े बच्चे हो चुके हैं. विद द नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट. तो परचेज के ऑपोजिट में क्या लिखा है चिल्ड्रन? प्लीज पुट इट. टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. इन कैश 24 and discount 1. Understood how compound entry is posted? Done children? समझ में आगे? Be quick, be quick. Again answer children. क्रेडिट में कैश नजर आ रहा था, कैश की कौन सी साइड में फिलिंग करेंगे? क्रेडिट साइड, विद द नेम ऑफ द ऑपोजिट. वैल्यू क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? 25 और 24? बिकॉज हम कैश अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो कैश के सामने वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 24,000. समझ में आ गया? सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है. अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ चावल 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 खाते हैं, आज दाल चावल दोनों है. तो ऐसा तो नहीं चावल मूंग डाल दाल खाने में डाल लेंगे, ये ड्रॉप नहीं है ना. Again children answer me, second credit account was what? Discount receipt. कुछ लोग सोच रहे हैं सर सवेरे परचेज हुआ था, दिन में पैसे दिए गए थे, शाम को डिस्काउंट मिला है, क्योंकि सर 3 लाइन में लिखा गया है. डोंट टॉक रबिश, ऐसा कुछ नहीं है, डेट सेम होगी. डिस्काउंट चिल्ड्रन किस साइड पे है? क्रेडिट साइड पे. तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड में पोस्टिंग किस साइड पे करेंगे? व्हाट? बाय परचेज अकाउंट. Value is 1,000. Difficult? Be quick. बच्चों समझ में आ गया? मैं फिर से बताता हूँ. सोहन was on the debit, तो सोहन's account will be filled on which side? Debit side, with the name of the opposite account. समझ में आ गया? Opposite में क्या लिखा हुआ है इसके? सोहन के opposite में क्या लिखा है? To cash to discount, तो हम to cash to discount लिख देंगे. In this journal entry, July 2nd, children, पहला credit account is what? Cash. It is on which side? तो cash में कौन सी side fill करेंगे आप? Credit side. And what would be the text? By Sohan Halwa. By Sohan's account.
Second credit account is what, children? सेकेंड अकाउंट क्रेडिट पे कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड. किस साइड पे है? क्रेडिट. तो कौन सी साइड फेल होगी चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे टेक्स्ट? वैल्यू 500. Heard well, children? Quickly do it, quickly. Cash account debit, discount, allowed account debit to Gopi. What's the first account debited, children? Cash. तो कैश की कौन सी साइड फेल होगी? With the name of the कैश के ऑपोजिट में डिस्काउंट तो नहीं लिखा है ना? क्या लिखा है? टोपी. गोपी. Value would be, children, 39,500. कैश के सामने जो लिखा है that we are going to post. Cash is coming how much? So debit what comes in. समझ गए? The next account on the debit is what, children? So we'll do the posting on which side? Discount allowed तो ledger का नाम है ना? Side. Debit side. How much? 500. And what was written on the opposite side? 500. Heard this well, children? गोपी is created. समझना क्या? तो गोपी के अकाउंट में फिलिंग किस साइड पे होगी? And what appears on the opposite? By cash account, by discount, allowed or received? 39,500 in front of cash and 500 in front of Gopi. Understood, everybody? Cash account debit, discount, allowed account debit to sales. Which account sounds to be on the debit, children? पहले cash. तो क्या लिखेंगे cash में आप? To sales account. Value 18,600. जितना cash के सामने है. समझ गए? समझ गए? Other account on the debit was what, children? To discount allowed maybe what we are going to write? To sales account. How much? 400. Debit में लिखिएगा. And which account was on the credit, children? Sales. क्या लिखेंगे sales में आप? बस. By cash account, by discount, allowed account. So this indicates goods worth 18,600 were sold and money received, and 400 worth of goods were given free of cost. समझ में आ गया? पक्का? I hope so. People will be able to balance these ledgers, children. The homework is this कि आप इनकी बैलेंसिंग करके मेरे को PDF भेज देंगे. Purchase, cash, sale, Sohan, Gopi, discount allowed and discount received. Okay. Next class में मैं आपको कुंभ मेले के दर्शन कराऊंगा. Okay, children. Any doubts to anybody?